Okay, so now let's start with the our work. So this is the next division, our work, and this is the fourth division. So one second, I think there's some changes. Okay, we can make some changes. Button shape. Okay, it's not black. I think there's some changes in the PSD. No issue. This is the second one, red. Third is the white one, and now this is the fourth one. And for the fourth one, uh, this one we have done. So 1, 2, 3, and 4. Let's start with this one, our work. So this is the fifth one, and the background color is EB. So in CSS, start with the new div, wrapper 5 with background color EB, 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 and the font color, just hover it. So the font color is 336. So background color and font color. So this is my div, wrapper 5. With a container, and then we have a row may call. So the first column in this is column 4 with subheading. So column 4 will have a subheading works. Let's see. So this is my subheading. Sorry. And after that we have 3 buttons, all website and branding. So these are 3 hyperlinks. So let's create these 3 hyperlinks. A class btn link, the already built class, all website branding. So this is all, this is website, this is branding. So these are 3 hyperlinks. Now go to CSS a.link. This btn link, this class. This is display block. Use display inline block. So now they are inline and block. And for the margin part, there's a margin. We use the same margin here. There's btn link. Okay, margin top 23. So there it's 23. So यहाँ पे भी 23 हो जाएगा. So there are 3 hyperlinks, all website and branding, like these 3. All is active. तो इसके लिए एक active class बनानी पड़ेगी. So this is btn space active. So we have this class btn link and add one more class in wrapper 5. Dot btn link dot active means button link with btn link with class btn link and active both. Background CA 3C 3C and font color triple F and border color CA 3C 3C. So this is my active link all, and these are other links. After that we have this portion, and there we'll have a picture. So this is a space for image. This is the hover portion. So when we mouse hover, so this content will come with this description, and these are others. So in the new row, so this is the first row with a call for. In the next row, we have to create column 4. So this is 4 column 1, 2, 3, 4 with a custom division. So the custom division will be, let's say, work or project. Okay, so in new row we have a column 4 with class name project, and within this project class we'll have a picture, the picture of project. So this gray is a sample image. So let's take this image, sample image, just click it using auto select layer. So the layer name is P1. Okay, now right click, one second, and make a duplicate layer on a new document. Okay, this,
Now this is the shape. Convert this shape into a normal layer using Control E. So using Control E, convert this shape layer into a plane layer and then go to images and use trim. Now this will trim the image. Save for web. So go to file, use save for web and save this image. So extension should be JPEG and my location is on desktop, PSD to HTML, IMG folder. So let's say the picture name is project. So inside project folder, we'll have an IMG tag with src img slash project. Okay, so this is my picture. So when we hover on this image, this content will come. So this is the content with the name and details. Now this is on absolute position. See, this will comes above this one. So we have to use absolute position. So let's say a class our project our class with a subheading. The subheading is project name and then a P. So P will be designed by the author. Designed by author, name of author and day. So this is the hover content. Now for this class hover and this class project, let's write some CSS in this step. So first, parent class name project with position relative dot hover class with background white and position absolute. Okay, so now this is absolutely position. With absolute position, bottom should be 0. So bottom इसका 0 हो जाएगा and width should be 100% of parent. ठीक है, तो this is 100% of parent node. For our text line should be center, तो वो center में आ जाएगा. ठीक है, and now change the color. So this is the total height. So the height of this white division is, see the total height is 100 pixels. So now this is the total height, means 100 pixels is the total height. Okay, so we have ours H3 and P. Now let's take this one. Its proxima nova bold and 18 pixel. So for H3, font size is 18 pixel and line height is, use corrector tool. Oh, 1 second. It's 18 and line height is 60. 1 second. Okay, it's 60, and for this one again the line height is 60. Okay, we cannot use 60, otherwise this height will be 120. Okay, so we have to use customize way. So now for this is 16 and this is 14 and this is thin font. So for P, class name should be light. Now for H3, use line height 40 and for this use line height 20. So now the total height is 60 pixels. So this is 40 and this is 20. So total height is how much? 60 pixel. Now for our use padding, top padding 20, left right 0. So see now the total height is 100 pixel. So this is 40 line height, this is 20, total 60, this is 20, bottom 20, so total 100. Also change the color. This is the color red and this is the color gray. So for this text, the color is gray. This is my color 89. After that, press escape key. This is the color for division.
Okay, so this is my caption, this is my heading, and this is absolutely position. Now for the other class, use display none. So use display none. And now let's have six division first, second, third, fourth, five, and six. So we have six different columns. Now this gap is 30 and the same this gap is also 30. So for the feature class or the project class, use margin top 30 pixel 000. So top is 30, this is again 30. So this is 30, this is 30, and on the hover. So the hover of dot project dot hover class display should be block. So on the hover of project class, the display of hover should be block. So when we hover, this will show. This is the interactive part using CSS hover, and this is actually hover. We can check on PSD. This is the div name, and see this. The name of this group is folder is hover. So the name of this folder is hover. So this means this is hover based interaction. So when we mouse hover, तब ये ऐसे आएगा. So we have six hovers. In bottom we have a button, and this is see more or load more. So there are six projects here. To load more, we have a hyperlink. So again, for that we have to use font awesome. So using font awesome, you can create this button in the bottom after this row. Okay, so after this row, you will have a class see more with span class fa hyphen plus. So it's plus circle. Okay, so check the font. It's font awesome with a 36 size. Background this, and the total width is 31, height is 32. Okay, so this is a see more display block, width 32, height 32, and color this. ठीक है, तो ये बटन आ जाएगा. Add some margin. 30. From the top, and after this we'll have a bottom gap. This margin, it's around 140 from the bottom. So above is 80. So padding top 80, 0, and the bottom is 140. So now this is pixel perfect. This is 140, this is the top is 80, and this is my heading, this is my collapsible links. Okay, so we'll add JavaScript, and this is my hover state. So on hover state, this is the content. There's a slight difference between the size of hover and this. Image is larger. So for the images, dot project space img use max width 100%. See, this is the right current image, but now image is okay, perfect. No, it's not overflowing. Otherwise, image थोड़ी सी it was large, बड़ी थी, overflow रही थी.
Okay, so this is the next division. After that, we'll have this div. This is wrapper 6. With the 6th division, the background color is 666, and so this is wrapper 6 with background 666 and font color white. So dot wrap 6 with container, then row. First column 2, which is empty. Second column 8. So this is empty column 2. Now this is empty column, and this is the 8 column. So but my 8 column is coming here. ठीक है? And the reason is that this इसको minimum weight देनी पड़ेगी. So there, write a CSS3 code that class caret equal to call. So this means class starting with call. So these all 12 classes are starting with call values. So the starting value is call. So all will be covered, and minimum height should be 1 pixel for all. So see now, the 2 जो पहले empty था, again it is still there, and this is my 8 column. Now within the 8 one, we have 3 sliders, 1, 2, 3, and this is the first one. This is active, so this is the first one with text, with image, and a heading. So this is 2 empty. This is the 8 one. In 8 one, create a class, let's say reviews. Okay, in reviews class, add 3 review. So this is first review, review 1, then review 2, and then review 3. Okay, so in the first review class, we'll have review, which is a quote. So using t tag or text element, we'll write a p tag, p with q. Q now quote tags, and within quotes, these are my quotes. Or do one thing, just simply write p without quote. So check the properties. It's Proxima Nova thin and 36 pixel white. For thin class, light, add font size. तो इसका font size है 36. Okay. So dot reviews dot review space p, font size 36, and text align center कर देते हैं. So this is center line. So this is text. Now इस p के start and end में we need quotes. तो review का p colon before content should be open quote, and after p content should be close quote. So हमें 2 quotes मिल जाएंगी, but see the interface is difference. ये quote अलग आ रही है, and no, it's like almost same ही है. So let's check Proxima Nova thin 36 pixel, and these are my 2 quotes. तो वहाँ पे और यहाँ पे we got 2 quotes. Let's add some gap. So wrapper 6 में padding top 45 pixel by 0. So this is 45, this is bottom 45, and this is my first review. This is the first review which is active, and इसके बाद we'll have a picture for the person. So this is the person. It's a masked layer. So use both the layers, this and this, and create a duplicate layer. कहाँ? On a new document. So this is your new document. Now using Control E is used to merge both the layers, and then use trim. Trim हो गया. Then इसको सेव करते हैं. Extension PNG ले सकते हैं, but PNG is heavy. See, it's 9.7 KB. So again use JPEG, but with JPEG the drawback is that there is no transparency. No issue. jack.png JPEG.
So this is the P, this is the image. For the image, this is my JPEG image. The image आएगी on the left, and this is not circle. Okay, so dot review dot p. So in review class, add text align center. So if review is text line center, so paragraph and image both are center line. So remove this now. Now call the image dot review space img, and for image use border radius. How much? 50%. So ये 50% round. After that we'll have a subheading. So use H3 or H4 subheading. So it's a reviewer, so heading level should, we can also use H4 level because we are not using H4. So for project we are using H3, but for review person name we can use H4. So this is the reviewer person name Jack Efren. Now after that we have 3 pages. So this is the active one, these are non-active. So this is first slide, first div review. We have 2 more review. So these are 3 divisions, 1, 2, 3. Only the first one is active, others are hidden. So use dot review display none, and in the first review add a class name active. So dot review dot active display block. So first is block and बाकी remaining all are hidden. ठीक है, so this is the first one which is active. Now after that we have a pager. तो यहाँ पे एक pager होगा. So this pager we can also create using CSS, using a list. Let's check this. So this is ellipse 3. Now control click on this layer, we'll get the properties. तो width कितनी है? 10 and height is again 10. तो 10 width, 10 height, and the others one के लिए this is the border. तो ये hollow है, तो for hollow border is 2. इसका भी border 2 है, इनका भी border 2 है. This is transparent, filled, and these are hollow. So after this is reviews, this is the first review div, second review, third review. After this, add a class name pager. In pager, an ordered list with 3 allies and then hyperlink. So first, second, and third. So there is no text, so remove the text. First, a class active. This is the active one. Chalo, start with CSS. Dot pager. Pages unordered list. Pages you will ally. So for the list, float should be left and allies A. तो यहाँ पे 3A है और A display should be blocked, and width कितनी 10, height 10, border 2 pixel solid white. So these are 3 divisions, border, and then border radius 50%, 1 2 3. ठीक है, फर्स्ट इज एक्टिव, तो जो एक्टिव है वो फील्ड है. A डॉट एक्टिव का बैकग्राउंड white, this is white. Now check the gap. The gap between 2 layers is, check the width, तो width is 10, तो दो में 10 का gap है, तो use in ally flat margin of 5 pixel. तो 5 left 5 right means total 10, तो this is total 10. Now ये तीनों होनी चाहिए यहाँ पे सेंटर में, so इनको सेंटर में लाइन करना है. Now ये बिल्कुल परफेक्ट सेंटर में होंगी फॉर एनी डिवाइस, रिस्पॉन्सिव हो या नॉन रिस्पॉन्सिव डजंट मैटर, तो ये सेंटर में ही होगा. So इसको सेंटर में लाने के लिए क्या करते हैं, use inspect now. So this is call 8. Call 8 is 799.9, which is almost 800. And inside this is review, and
in the review we have this pager class. See the width of pager. The width of pager is 769.9 and height is 0 because all this UL and it's not UL, the LIs are floating. So all LI are floating and that's why the height of pager is 0. So see the height of pager is 0. If we use float left for the pager, so now see the width of this pager is 60 and height is 20. So that means this pager need minimum 60 pixels width, but default width is 6769, but we actually required only 60 pixels. So for the pager or the UL, use width 60 pixels. And now for center line, use margin auto. So see, this is margin auto. So width 60 pixel so that width छोटी हो जाए, and then use margin auto ताकि वो center में आ जाए. So this is center align, and after that, just check the gap. So top bottom 25 pixel, left right auto. This is the pager. This is first, this is second, and this is the third one. So this is my review panel. After that, we'll have this team panel. So in team, we have 3 columns. So 3 team uh, person with their social profile and description. So background is white, and again the font color is 36. So the dev name will be wrapper 7 with font color this. So after 6 wrapper 7 with a container. So container class with row, and first column is column 4 with h2. Our team, so our team आपका first है, and इसमें भी top पे gap कितना है? Use 80 by 140. I think हमने already we have used. So this is 80. This is our team with border, bottom, and padding using h2. Now after that we have these 3 divisions. First, second division. So by mistake this one is missing, but we have to draw. So this is first, second, and third, and we have to use 4 column. Call 1, 2, 3, 4. Okay. So this is call for first row, and now in the next row column name should be 4. So column 4 hoga, and inside we'll have a class name team. In team class, the first is picture. So for this, let's select this avatar, right click, duplicate layer on a new document. ठीक है, convert करो in a plain layer, and then use trim, save for web, JPEG, avatar. So dot team class. So this is team class, and then inside team we have this picture. Okay. Use margin bot top, this margin. This is the first picture which is an avatar. और उसके बाद next क्या है? We have these 3 social icons. So social icon कौन कौन से हैं? This is the first one, which is Twitter, Facebook, and Instagram, and they all are absolutely positioned. So this is team. This is the picture of team, and then we'll have a class name social with unordered list, li, and a. So for this a, target should be underscore blank and span fa space fa hyphen Twitter. So first is Twitter, Facebook, and Instagram. So Twitter, Facebook, and the third is Instagram. ये तीनों हमारे icons हैं. Now use this class.
This is team, then this is social, social with UL, social UL's ally, ally is A, and for A, color is white and background is this. Okay, these are A. Now check the size. For the circle, width is 50, height is 50, and font size of font awesome is 24. So font size 24 pixels. These are 24. ठीक है. Display change कर दो. Inline to block. Width 50. Or instead of height, use line height 50. It's a text. Then text line center and border radius 50%. तो ये राउंड हो जाएंगे. ठीक है. For I use float left. तो ये ऐसे आ जाएंगे. But they are absolutely position क्योंकि ये स्पेस नहीं दे रहे. So now see our division जो वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है. So from the top the gap is 60 and this is the right. Again from the right the gap is 60. So it's perfectly 60 from the right, 20 or 60 from the top. For social, position should be absolute, top should be 60 and right should be 60. Now we have to use this position relative to the parent element, और अगर नहीं यूज करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा. See, ये आइकन्स यहाँ चले जाएंगे. For the team, the parent should be relative. तो use position relative for the parent class. ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएंगे. Now ये गैप चेक कर लेते हैं. Count 80. Social or not social? Team. Margin 80 by 0, तो ये 80, bottom से भी 80 देते हैं. Let's say these are three icons. 0 is 60 from the right and यहाँ से top से भी 60 आ रहे हैं. So these are absolute and in between we have some gap. तो ये gap कितना होगा? Let's check. It's 10. So allies में margin top bottom 0, left right 5, 5 from the left, 5 from the right. तो total कितना हो जाएगा? 10. So this is 10, 5 left से, 5 right से, top से 0. So first is Facebook, second is Twitter, second is Facebook, third is Instagram, and these are three hyperlinks. इसके बाद there is a div with 100 pixel gap from the left. So same here, same here. So there we'll have a subheading, profile, description, and some text. So एक class बना लेते हैं with this left gap 100 pixel. Same class we have to use here. वो same class आपकी यहाँ भी use होगी. Again, the gap is 100. So एक common class जैसे left 100. ठीक है, with padding left 100. So this is the common class, padding left 100, and also this gap is around 40 और यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे 50 है. So class name, so this is in team image social. After social we have a class dot name left 100. So in left 100 h3 Michael Joe. Then for the profile use small and founder. So इसका color red है, इसका color gray. This is also thin.
class light. So dot team dot h3 color this, and team dot small color this. ठीक है, check the font size. तो इसका font है 18 and इसका font है 14. Do one thing, body का default font family this है, so use font default size 14 pixel and font family proxima. तो default size is 14, so by default ये छोटा हो जाएगा. Small का fs 14 करना पड़ेगा and h3 का font size 18. So this is 18, this is 14, बीच में gap, तो use line height instead. तो 18 की line height कितनी आ रही है? 60 आ रही है. I think it's large. तो if you use 60 line height ये ज़्यादा नीचे आ जाएगा, but sufficient है, इतना okay है. And then we have some text. So dummy text lorem. ठीक है, so this is my text. Now create 3 divisions. तो 3 होगी यहाँ पे. So call 4 को repeat कर देते हैं, 1 2 and 3. तो these are my 3 team. And again a same button. तो यहाँ पे भी after this columns आपको वही class use करनी है. So row के just बाद a class simo span class fa hyphen plus circle. ठीक है. Next division background 666. तो wrap I think earlier 7 था, तो ये 8 होगा. Container row column 3. This is 3 columns, तो यहाँ पे total 4 हैं, so we'll choose a column 3. तो ये हर एक 3 column होगा. All are center line. तो dot wrap 8 background 666 font color white and text align center. So this is top, which is around 85. So use a padding 80 pixel by 0, top and bottom. This. Now add 3 text. First an icon, then a number, and then a text. So first is an icon. So a span class fa hyphen. The first icon is gift. So first is my gift icon. इसका font size देख लेते हैं using text tool. So for the gift, it's 72. So dot wrap a का span dot fa. Font size 82 pixels. ठीक है. So this is I think 82 or 72. It's 72. तो ये 72 आ जाएगा. Second, we'll have a text which is thin, वो भी 72. So p dot light 72. P class light 72 2009. So this is my
p dot light. इसके बाद we have another text. Now this is bold, so use a p with b bold class and write a plain text 18 size. P space b bold font size 18 18 पिक्सल, तो ये बोल्ड हो जाएगा. This is thin, p dot light. Increase the light shade. तो ये फर्स्ट है. एंड द सेम मैनर वी हैव थ्री. तो थ्री कॉल थ्री हैं. Just copy paste 1 2 3 4. Change the icon. This is gift. This is comments. Third, coffee. Fourth, uh, reward or trophy. So 1 2 3 4. Change the text now. ठीक है. Again a new division. Now these are some icons and ये आपके SVG icon से बनेंगे. So this is a skill. So wrapper 9. With wrap 9, color again 666, sorry 36, and padding top bottom 80 by 140 pixel. Use the same standard. This is wider. Now again first use an H2. Container row column 4 H2 skills. So first is skill. ठीक है. So skills पहला हो गया. And then we have two divisions. So first is 8, second is 4. So this is first row, next row with 8 column and 4 column. In 8 column we have these 4 icons. So for that let's create a nested row with column 3. तो इसमें 3 columns हो गए 1 2 3 4. And after this row we have the plain text class जो हमने gap बना रखा था. In the same column, column 8. So column 8 में first we'll have these 4 and then we have this text, and for this we have a class name left-handed. So in left-handed class हमारे पास h3 था and p था. Use left-handed p. तो इसका भी कलर चेंज आएगा heading and paragraph. Now we have to use this. These are static right now. So right now we can use image, but in future we have to use canvas or SVG. तो dynamically बनाने के लिए we have to use canvas या SVG. So these are your charts. तो यहाँ पे charts use होगा and this is a donut chart. So temporary I'll create an image. इसमें text लिखा हुआ है 75. So use both.
और डुप्लीकेट लेयर, ठीक है, मर्ज, कंट्रोल ई, देन ट्रिम, सेव. Now for transparency use PNG, and this is donut chart. So donut. So in first we'll have a static image donut chart, ठीक है, and remaining images I don't have, तो मैं temporary इन्हीं को copy paste कर रहा हूँ. Sorry. तो ये मेरी 4 डोनट की पिक्चर्स आ जाएंगी. Add some gap, तो all skills के नीचे यहाँ पे we need some 80 pixels gap, तो so wrap 9 space h2 margin bottom add 80 pixel. ठीक है, so this is full text, this is the heading, and after that this is the main thing, ये, and this is an, तो ये है हमारा कोलैप्सिबल, नो इट्स एन अकॉर्डियन. तो अकॉर्डियन में क्या होगा, दैट आपको किसी एक पे क्लिक करना है एंड वो हाईलाइट हो जाएगा. सो वी हैव टू क्रिएट दिस. तो चलो किसी एक की प्रॉपर्टी चेक करते हैं. तो दिस इज अ राउंडेड एंड कंट्रोल क्लिक, तो विड्थ हाइट आ जाएगी. तो विड्थ फुल है 370, हाइट इज 50. सो इन द फोर्थ कॉलम विल हैव accordion. So use a class name accordion with ul li. तो unordered list with li, तो ul with 5 li होगी. हर li में this is the first text and this is a plain text. तो this is the first content जो heading के लिए होगा. So heading में 3 चीजें हैं यहाँ पे, span, plain text and plus minus icon. So in li, first add a h4 and within h4 we'll have an icon. So span class fa space fa hyphen rocket. So first icon is my rocket and then some text. So rocket text, and on the right hand side हमारे पास क्या है, we have a minus icon. तो इसके लिए we'll add a class span class fa hyphen minus, ठीक है, and minus होगा बिल्कुल adjacent right पे. so there's a class pull right, ठीक है, जो कि float right करेगा. तो use a class pull right, ये बिल्कुल right पे float हो जाएगा. so ये left पे हैं, these are on the right. now use the parent class dot accordion. तो accordion कौन है, dev. Accordion, accordion's ul, ul's li and li's h4. तो h4 की लाइन हाइट कितनी आ रही है, आई थिंक 50. तो टोटल हाइट, लाइन हाइट देते हैं. ओके दिस वाज 50 एंड ऐड अ बॉर्डर. तो इसमें बॉर्डर देना मुझे. सो दिस इज द शेप, यूज रेक्टेंगल टूल. तो दिस इज स्ट्रोक 1 पिक्सल. तो ये स्ट्रोक है 1 पिक्सल एंड द स्ट्रोक कलर ये रहा. इट्स इन ग्रे कलर. तो लाइन हाइट 50, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है. देन border radius, ये rounded I think, yeah this is the rounded one. To use the second rounded and check the border radius, it's 10. तो border radius कितना होगा, 10 पिक्सल होगा. then inside gap के लिए we'll have padding. तो ये inside gap किससे आएगा, padding which is width 20. तो
पैडिंग 20 फ्लैट देंगे तो आई थिंक प्रॉब्लम करेगा। ओके, तो लेफ्ट से 20, टॉप से देने की जरूरत नहीं है, तो पैडिंग टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट 20। तो टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट 20। ये फ्लोट है तो सेंटर में नहीं आ रहा, तो दिस इज द स्पैन। अच्छा, दिस इज फ्लोटिंग ना। सो फ्लोट है ये, तो उसको वर्टिकल लाइन देके, no, तो इसको मार्जिन टॉप देना पड़ेगा 20। सो अकॉर्डियन की एलाई का स्पैन डॉट फुल राइट का मार्जिन टॉप शुड बी 20 पिक्सल्स ओनली फॉर दिस वन, जो राइट पे है, बाकियों को नहीं। दिस इज द फर्स्ट, जिसमें आपका टेक्स्ट स्पैन आइकन। नाउ साइज 24, तो स्पैन डॉट एफ ए 24 फॉन्ट साइज, बट फॉन्ट साइज इसका और इसका दोनों का सेम हो जाएगा। तो दिस इज 24 एंड फॉर दिस आइकन, ओके, ये शेप है, दिस इज नॉट टेक्स्ट। अगेन चेक दिस, ये भी शेप भी है, दिस इज नॉट अ टेक्स्ट। नाउ इट्स अ शेप, तो हम इसको मैनुअल बनाना पड़ेगा। तो लेट्स, इसकी हाइट कितनी आ रही है, 10। तो फुल राइट का एफ एस 10 पिक्सल देते हैं। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। नाउ दिस इज द टेक्स्ट। वन सेकेंड, तो टेक्स्ट से दिस गैप इज 24, 25। तो जो स्पैन एफ ए है, दिस इज द फर्स्ट स्पैन, तो इसको लिए फर्स्ट चाइल्ड यूज कर सकते हैं। तो स्पैन एफ ए कॉलन फर्स्ट चाइल्ड, राइट मार्जिन ले 25। तो दिस इज 25 पिक्सल। ठीक है, तो दिस इज माई आइकन, ये इसमें हेडिंग है, ये इसका आइकन आ गया। एंड जो फर्स्ट एक्टिव है उसमें जो फॉन्ट कलर होगा, नॉट बॉर्डर, द फॉन्ट कलर, वो क्या होगा, वो रेड होगा। सो ये सारे के सारे आपके H4 हैं, इसमें बॉर्डर ग्रे कलर का है, तो दिस इज द ग्रे कलर। ठीक है, नाउ ऐड मोर, और इसमें प्लेन टेक्स्ट भी है। सो इन li दिस इज H4, देन वी हैव a p which is plain text, ये विजिबल है। एंड वैसे ही बहुत सारी एलाइज हैं, 1 2 3 4 5, सबका p हिडन है। तो अकॉर्डियन का p डिस्प्ले नन, तो सबका डिस्प्ले नन हो जाएगा। बट एक्टिव कौन सा है, फर्स्ट एलाई। एलाई डॉट एक्टिव हो, तो उसका p का डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, तो ये एक्टिव है तो इसका p का डिस्प्ले ब्लॉक। एड सम मार्जिन, 18/0, तो ये ऊपर से गैप ले लेगा। देन यहाँ पे भी गैप है, सो चेक दिस गैप, थोड़ा सा एक्यूरेटली करना। दिस इज 10, तो विद इन li मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, तो ये 10 हो जाएगा। फर्स्ट एक्टिव है, तो li एक्टिव का H4 कलर 10, 1 2, इनका कलर रेड हो जाएगा, बट सिर्फ एक्टिव का, बाकियों का नहीं, बाकी तो ग्रे ही रहेंगे। तो दीज आर द रिमेनिंग वन,
इनका कलर क्या है 8 9, तो एक्टिव एंड ये एवा है, तो इनका कलर 8 9 रहेगा, तो दीज आर ग्रे और ये हो जाएगा रेड। तो इन पे आपका हवर आएगा, तो पिच4 पे कर्सर पॉइंटर होगा ऐसे, एंड व्हेन वी क्लिक दिस तो ये आइकन चेंज होंगे। तो इसमें बाकियों में प्लस आइकन होगा। सो दिस इज लॉक, दिस इज लॉक ओपन, वी हैव अ सिंगल आइकन, ठीक है। देन लोकेशन, fourth is call or telephone, no, this is phone होगा, okay, तो phone icon, and the last is book, ठीक है। so and इनके आगे after first this is plus icon, तो ये भी प्लस है, ये वाला प्लस, तो ये सारे के सारे प्लस होंगे, एंड क्लिक एक्शन आपका जावास्क्रिप्ट से होगा। तो दिस इज डन। नाउ 1 2 3 4, नेक्स्ट है दिस, जिसमें दिस इज अ सब्सक्राइब बटन, तो div नेम wrap 10 container and row। नाउ सी ये कंटेंट कितने में है, सो दिस कंटेंट 1 2 3, एंड यहाँ से भी कितना गैप है 1 2 3, तो दैट मीन्स 6 में ये कंटेंट आ रहा है, तो ये टोटल वेट कितनी है 6। सो फॉर दैट डॉट कॉलम 3 होगा एम्प्टी, एंड देन होगा कॉलम 6। इस 6 में आएगा आपका एक फॉर्म एलिमेंट, सो देयर इज अ फॉर्म, इस फॉर्म में प्लेस होल्डर क्या लिखा हुआ है, एंटर योर ईमेल हियर, सो दिस इज अ प्लेस होल्डर एंड दिस इज अ सेंड सब बटन। तो फर्स्ट एक इनपुट जिसका प्लेस होल्डर, enter your email here, and एक बटन सब्सक्राइब, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ रहा है। नाउ dev name wrapper 10 background, this font color CA 3C3C, तो ये dev, ठीक है। नाउ this gap is 23, तो padding 23 पिक्सल बाय 0, ठीक है। तो ये इनपुट टाइप टेक्स्ट, एंड ये आपका सब्सक्राइब बटन। इनपुट का जो साइज है दैट इज 1 2 3 एंड 4, 4 कॉलम्स। तो डू वन थिंग, सो दिस इज 4 कॉलम एंड दिस इज 2 कॉलम्स, ये 2 में आ रहा है, ये छोटा है वैसे, एंड दिस इज 4 कॉलम, सो दिस इज 6। अब 6 में यूज अनदर रो विद 2 कॉल, ठीक है। तो जो फर्स्ट कॉलम है उसमें ये इनपुट आपका पूरा फुल साइज का आ रहा है, सो सी इसका साइज कितना होगा 4 of 6, तो 4 of 6 कितना होता है 8, तो ये 8 कॉलम आएगा और ये आएगा 4 कॉलम। सो नाउ इस इनपुट को
ऐड कर दो इन द 8 कॉलम और बटन को ऐड कर दो इन द नेस्टेड 4 कॉलम। तो ये यहाँ आ गया। नाउ इनको साइज देना है। ठीक है, तो पहला बटन बनाते हैं। दिस इज द बटन इंटरफेस। कंट्रोल क्लिक, विड्थ 90, हाइट 35, क्लास btn, width 90, height 35, background white, border none। ठीक है, now font color this, पापा का फोन, font size 16, ठीक है। सो सब्सक्राइब लिखा है एंड राउंड कॉर्नर करने के लिए चेक इट्स अ शेप, तो ये शेप है। चेक द राउंडेड कॉर्नर शेप एंड रेडियस कितना है 10। तो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल से ये राउंड हो जाएगा। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे फॉर्म सबमिट होगा। तो ये एम्प्टी है। टू स्टॉप, add required, we can also use input type email। now इसका URL बनाते हैं। this is the text which is boxman over thin and 36 pixels, this is placeholder and placeholder का color white है। input of type email, ठीक है, with 100%। तो ये कॉलम 4 में फुल 100% ले लेगा, तो सी कॉलम 8 में 100% लेगा, दैट मीन्स फुल एंड टू एंड विड्थ का। देन बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट एंड बॉर्डर नन। ठीक है, प्लेस होल्डर ग्रे होता है। सो टू चेंज द कलर ऑफ प्लेस होल्डर हमें प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए प्लेस होल्डर एंड वेबकिट प्लेस होल्डर, मॉस प्लेस होल्डर, तीनों का कलर शुड बी वाइट एंड फॉन्ट साइज कितना आ रहा है 36। के इसकी हाइट भी बढ़ानी पड़ेगी। ओके चलिए। सो पैडिंग थी 23, ये जो रेड है कंट्रोल क्लिक, दिस इज 80। सो 80 टोटल हाइट है, -23 टॉप पैडिंग, -23 बॉटम पैडिंग, तो रिमेनिंग इज 34। सो इसकी हाइट कितनी होगी इनपुट की। सो हाइट शुड बी 34 पिक्सल। ओके, बट 34 में फॉन्ट पूरा नहीं आ रहा। so, आई थिंक इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, ये लाइट फॉन्ट भी है। हम्म,
वेज इनपुट हाइट ज़्यादा रखनी पड़ेगी 36 गेन। ओके, वी हैव टू गो विद 42 हाइट। तो कंटेनर हो जाएगा 88 टोटल, जबकि टोटल होना चाहिए था 80। तो मेक इट 19। ठीक है, तो सी नाउ कंटेनर की हाइट आ रही है, तो ये टोटल 80 हाइट का आ रहा है। तो यहाँ पे आपने फोकस किया और जो टाइप किया, तो दिस इज वैल्यू, तो वैल्यू का भी कलर वही होगा जो प्लेस होल्डर का है। तो दिस इज प्लेस होल्डर, तो दिस इज योर वैल्यू। इसमें फोकस चेंज कर देते हैं, आउटलाइन नन। तो दिस इज योर फॉर्म। ठीक है, देन ये थोड़े से इजी हैं, सो आई जस्ट स्किप दिस। तो ये है एक div विथ 6 बटन्स जिसमें बैकग्राउंड कलर है 7F। तो डॉट wrap 11 background 7F 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 and font color triple F। So this is the div। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फॉर्म। जो ये बॉटम पे फॉर्म है इस पे, सो अगेन वी हैव अ div जिसमें टॉप बॉटम से गैप है। तो दिस इज रैपर नंबर 12 with background color EB, font color white। ठीक है, पैडिंग आई थिंक वही टॉप से 80, बॉटम से 140। तो 12 a new div within container, then first a row जिसमें call for h2 contact us, color this। ठीक है, then after that address tag, so this is your postal address tag, then again social। तो in the same column 4 आपका next क्या है, एड्रेस। तो यूजर टी टेक्स्ट टूल कॉपी 16 पिक्सल्स के हैं, एड्रेस टैग दिस यूज ब्रेक। ठीक है, तो फॉन्ट स्टाइल रेगुलर होगा, नॉर्मल, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, इन गैप होगा। पहले लाइन हाइट देख लेते हैं,
30। तो 3 लाइन में आ रहा है। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा है, दिस वन। ओके, हाँ, ये दिस इज ओवरफ्लो। तो डू वन थिंग, रिमूव दीज टू। एड्रेस को रिमूव करो फ्रॉम द कॉलम 4, एड अ न्यू रो और विदाउट रो यहाँ पे एड्रेस ऐड कर देते हैं। ठीक है, एंड देन एड अ सोशल डिव, बट सोशल इज ऑलरेडी देयर, सोशल एक टॉप पे भी था। तो दिस इज social footer. ULIA span class FA hyphen. तो फर्स्ट क्या है आपका? ट्विटर, फेसबुक, तो टारगेट उसको ब्लैंक, आर यू नो फॉलो, फर्स्ट एल आई, सेकेंड एल आई होना चाहिए फेसबुक, थर्ड गूगल प्लस विच इज आउट रिमूव नाउ, तो नॉट रिक्वायर्ड, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है, सो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, देन स्काइप एंड लास्ट dribble. So these are font awesome with 16.22 pixel size. किसी और का चेक करते हैं, it's the same. Dot social footer. Ally left. Check the average gap. It's 20. Ally में margin 10, तो top bottom 10, left right 10, तो ये ऐसे आ जाएगा. तो these are my 6 different social icons. And now the most important thing is the form. ये form, this is the most important thing. So we have another form after social div. So this is my footer form. So this is the form. Now in this form we'll have two rows, first and second. So first row, second row. In first row column कौन कौन से होंगे? 4 and 4. तो call 4. In the second row पहला column 8 and then 4. तो ये होगा 8, ये होगा 4. तो 4 4 first row, 8 4 second row. Now ये जो बॉर्डर है, दिस इज द लेबल. तो बॉर्डर होगा आपका लेबल के अंदर. सो यू हैव टू क्रिएट अ लेबल. डॉट wrapper 12. ओके, 12 फॉर्म का लेबल. फॉर द लेबल डिस्प्ले ब्लॉक एंड बॉर्डर 2 pixel solid. So it's 2 pixel solid color 36. ठीक है. Now add a label first. दिस इज द लेबल. तो सी लेबल आपका वहाँ यहाँ पे क्यों आ रहा है? तो okay, I think these all are the floating one. तो UL के just बाद add a clear. ठीक है. This is label and label आपका full width का है
inside label add a padding with 17. This is the label. Label में first is a span class fa hyphen, ये क्या आइकन है? It's message or mail, no, envelope. तो ये envelope आ रहा है. Add a padding to label, padding 17 की देते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा. ठीक है. Envelope, and after envelope we have a plain text, that is email. ठीक है. And after that we have a transparent input. तो इसके आगे होगा एक input which is transparent. तो input type text which is required, no placeholder. तो ये आपका कुछ ऐसे है. तो within label जो भी input हो उसका background transparent, border none. तो से ये इतना है. Font size 16 pixel. And width let's say around 300, 200. So this is my input. तो ये फर्स्ट में है add the same label in the second. तो फर्स्ट क्या था? email. सेकंड इज name. तो name में यहाँ पे आएगा user and name. Third is your again a label with text area. FA pencil message. Now within two labels 30 pixel gap है. Now label a block, तो margin add करो 15 pixel top bottom by 0. So top 15 bottom 15 total will be 30. Now this is text area. Text area with 4 rows and calls, let's say 100. Or 80. The text area width and border. Okay, so vertical line change होगा. So this is top. So for the text area, vertical line should be top. तो ये आ जाएगा आपका मैसेज. टॉप पे क्लिक करो, ये आपका टेक्स्ट एरिया है. And in the end we have a button. Full width button है. तो check the height. Width full है. तो it's 80. So यहाँ पे we'll have a button जिसमें क्या लिखा हुआ है? Span class fa hyphen check. Check circle O. तो check circle O with text. Submit.
तो रैपर 12 का फॉर्म एंड फॉर्म का बटन, बटन की विड्थ 100%, बैकग्राउंड वाइट एंड बॉर्डर नन। ठीक है, हाइट 80, ठीक है, फॉन्ट साइज टेक्स्ट का 16 है एंड फॉन्ट ऑसम का 36 है। हम्म, तो इसका वर्टिकल लाइन मिडिल हो जाएगा। बटन का कलर दिस एंड राउंड कॉर्नर के लिए check the shape, it's 10 पिक्सल। तो बॉर्डर रेडियस इसका हो जाएगा 10 पिक्सल। तो दिस इज माय बटन जो कि यहाँ पे आ रहा है। सेम बटन पे इतना ही मार्जिन रहेगा जितना ये टॉप बॉटम ले रहे हैं। सो मार्जिन कितना था टॉप बॉटम से, 15 पिक्सल्स बाय 0। तो ये सेम हो जाएगा, बट इन दोनों का साइज इक्वल है, वो था सेम साइज। तो इसकी हाइट 80 है तो टेक्स्ट एरिया की भी हाइट 80 होनी चाहिए। ओके, इसमें पैडिंग भी है। तो दिस इज माय फॉर्म, फर्स्ट इनपुट, सेकंड इनपुट, third, and then submit button. Just click there, the form will submit. So this is the form and this is the last row. Wrapper 13, background, colors में okay, this color is 252525 and my background is again 252525. Okay, this is the color and इसका center line होना चाहिए, text line center, तो ये आपका center में आ जाएगा। Now copy your code and check on other browsers जैसे Firefox पे for cross browser issues. This is Firefox without any confliction, तो see this is okay, this is okay, ये भी okay है, hover proper work है कर रहा है, these are pages, ये भी ठीक है, this is perfect, ये भी ठीक है, these icons, placeholder working है, contact form working है, and submit button. And now check on the last browser which I'm using is Safari. So this is Safari, header okay, this okay, third okay, fourth, fifth, hover okay, these are okay, ये भी okay है, this is okay, ये भी okay है, borders are okay, placeholder is working,
okay है, form is working, okay है, and this is my submit button, this is again okay. So this is my cross browser test on different browsers. So this means this website is also working on most of the latest browser. Okay, you can also test it on Internet Explorer 8. So IE8 is the only browser which I'm not using right now, I'm not having, so you have to test on IE8. Okay,